जब से 2023 शुरू हुआ है आई एम ट्राइंग दिस न्यू थिंग आउट वेयर एवरी मंथ मैं एक ऐसी चीज़ करूंगा जो मैंने अब तक लाइफ में कभी ट्राई नहीं की है। जनवरी में वो चीज़ थी गेटिंग अप अर्ली एंड गोइंग फॉर अ वॉक। फिर फरवरी का महीना शुरू हुआ एंड आई हैड हर्ड पीपल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग एवरी डे। कैसे जर्नलिंग हेल्प देम इम्प्रूव क्लैरिटी, फोकस, कीप अ ट्रैक ऑन देयर गोल्स एंड गेट ऑल ऑफ देयर थॉट्स डाउन ऑन अ पेपर। सो मैंने सोचा लेट्स ट्राई जर्नलिंग फॉर 30 days ये देखने के लिए कि वेदर आई see the same benefits myself. But if I'm being completely honest, I could not help but think that it was completely useless until it wasn't. So when it comes to journaling के काफ़ी different types है. You can make a dream journal to keep a track of your dreams, a food journal to keep a track of what you eat, फिर एक workout journal to track your gains, a bulleted journal to track your habits, tasks and prioritize your work. आपने notice किया होगा कि the key word here is track. So by tracking our progress, we are able to see growth जहाँ it is not very evident. Day-to-day progress is elusive, that is what I think, and we can easily get knocked off of our courses because of all the other distractions. और जर्नलिंग एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे लाइफ का एक बर्ड्स आई व्यू देती है। सो फॉर 30 days आई कमिटेड टू राइटिंग अ फ्री फॉर्म मेरे पूरे दिन का टू ट्रैक माई ओवरऑल स्टेट ऑफ माइंड एंड टू पॉसिबली कन्फ्रंट थिंग्स दैट आई अदरवाइज वुड नॉट हैव एंड होपफुली जानने के लिए कि मेरे मन में चल क्या रहा था एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम एंड टू अंडरस्टैंड माई थॉट पैटर्न। इधर मुझे ऐसा लगा कि इट विल रिवील सम ग्रेट सीक्रेट्स ऑफ माई लाइफ और इट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ये मेरा फर्स्ट टाइम था ट्राइंग आउट जर्नलिंग। इससे पहले आई हैड नेवर ट्राइड जर्नलिंग बिफोर, सो नेचुरली आई हैड टू फेस सम चैलेंजेस एंड टू बी ऑनेस्ट सबसे बड़ा चैलेंज फॉर मी इन 30 दिनों के लिए वाज बीइंग कंसिस्टेंट। नाउ मुझे लगा था कि लाइक एनी अदर थिंग दैट आई हैड ट्राइड इन द पास्ट मुझे जर्नलिंग की हैबिट लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इन जनवरी मैंने डिसाइड किया था कि जल्दी उठना है और वॉक पे जाना है एंड आफ्टर फोर्सिंग माई सेल्फ इनटू डूइंग दिस फॉर स्ट्रेट अप 7 days मुझे उसकी आदत पड़ गई। बट इट वॉज नॉट द सेम केस फॉर जर्नलिंग। इवन आफ्टर फोर्सिंग माई सेल्फ इनटू journaling for straight up 7 days, the next day I used to just forget about it. ऐसे अंदर से वो फीलिंग नहीं आती थी कि I have to write the journal और इसकी वजह से I naturally skipped some days, ज़्यादा नहीं बस 3 से 4 दिन max. But I held along because I really wanted to see whether I get to see the same benefits as others. And eventually after some time I really started enjoying it. So for this process I chose this. So ये एक नवनीत की स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक है जो मैंने उठाई थी एक लोकल स्टेशनरी शॉप से फॉर अबाउट 170 रुपीज। मुझे एक ऐसा एंटायर प्रॉपर बुक जैसी बुक नहीं चाहिए थी। आई वॉन्टेड समथिंग स्मॉल एंड समथिंग दैट आई कुड इजिली कैरी एवरीवेयर। ऑल्सो मुझे इस पे जो कॉफी मशीन का डूडल है वो काफी पसंद आया बिकॉज आई हैव अ सिमिलर कॉफी मशीन एट माई हाउस एंड दैट्स द रीजन वाई आई वेंट विद दिस पर्टिकुलर वन। नाउ आप अगर जर्नलिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन लिटरली स्टार्ट विद एनीथिंग। ऐसी ही कोई बुक या फिर डायरी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। You can literally use an A4 size paper or even an entire drawing book and even you can write your journal on your smartphone itself. It totally depends on you, so choose whatever you like. So I started writing. Now the way I had planned on doing this was हर दिन मैंने मेरे दिन के एक 10 मिनट रिजर्व करके रखे बाय द एंड ऑफ द डे टू राइट डाउन एवरीथिंग दैट आई फेल्ट इन दैट पर्टिकुलर डे। आई रोट एवरीथिंग अबाउट माई एंटायर डे राइट फ्रॉम व्हेन आई वोक अप, मेरे मन में क्या चल रहा था व्हेन आई वोक अप। आई रोट अबाउट व्हाट आई डिड व्हेन आई वेंट टू कॉलेज दैट डे, लाइक स्टडीज, असाइनमेंट्स, जो कुछ भी टास्क्स मैंने कंप्लीट किए इन कॉलेज इटसेल्फ। राइट अबाउट द पीपल आई मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड हाउ डिड आई फील आफ्टर मीटिंग देम। फिर कॉलेज से घर आके मैंने क्या क्या चीजें की, लाइक शूट सम स्टफ, रिसर्च अबाउट सम स्टफ दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to getting myself into, playing video games with my friends and all the usual things and the things that were out of the way on that particular day. Anything that came to my mind that I could remember about the day, I wrote it down until I got bored. And to be honest, the boredom kicked in pretty quickly. So जैसे जैसे the days went on into this challenge, मुझे ऐसा लगने लगा कि journaling was something that I had to do and not something that I wanted to do. मैं किसी ना किसी चीज में busy रहता था या फिर some days I would come home late और उस दिन की एंट्री मैं नहीं भरता था। So that was like a challenge, as I said before, being consistent and enjoying the entire process because it felt like an obligation, something that I had to do.
So the one major benefit that I saw early on was with organizing my day. Now as I'm a student, I have to keep up with a lot of things every day. Classwork हो गया, assignments हो गए, project work हो गया, और मुझे एक ऐसी आदत पड़ गई थी कि कोई भी submission के एक दिन पहले वो काम करना. Free time होके भी I used to spend time doing unnecessary things. और मुझे लगता था कि मैंने कुछ unnecessary किया ही नहीं. तो looking back at the things that I wrote down in the journal, I could analyze कि वो चीजें क्या थी जिन पे मैं unnecessary time spend करता था, एंड यू नो वर्क ऑन इम्प्रूविंग दैट, सो दैट मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन चीज़ों को दे सकूँ जो एक्चुअली मैटर करती है. So things were going pretty well for me. I have a great family, I have great friend circle, no work pressure or academic pressure as of such. So to journal it felt kind of like boasting. It felt like हाँ मैं तो सब चीज़ें एस कर रहा हूँ, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं. So it felt pretty silly and counterproductive. Like I did not have any struggles to write about until I did. So as the year 2022 ended, all the people around me, like my friends, started applying for universities abroad for masters, and some of them even got placed in some really good companies, and I was just there standing looking at them. Now मुझे पता है कि मुझे future में क्या करना है, but I was not really working towards it. So I took the first step of giving the IELTS exam, which is an English proficiency test. And after I got the date for my exam, I don't know मुझे क्या हुआ, but I faced some of the worst anxiety I had ever faced in my life. I was caught off guard. I didn't know what to do. I had never felt such kind of a feeling before in my life, and I felt like this happened because I was thinking too much about the result. So this is February 22nd, the day of my speaking test. I wrote down, woke up with anxiety, feeling nervous because of the speaking test, did not do much, had coffee, did not feel like eating anything because there was a tension, there was a nervousness that I felt. I went for the speaking test. It went pretty well. I came back home, but after coming back home, I felt pretty shit. A lot of overthinking about the test. I felt like I could have done so much better in the test. Then I played some Valorant to feel better. And one of the most unusual things that I experienced on that day was I slept at 7:30 p.m. in the evening, and I woke up at 9:30 on my desk and my chair. This had never happened to me before. I watched some YouTube to, get my head out of the exam, and I wrote that I hope that I wake up feeling better tomorrow. EOD, end of the day. Now ये सब लिखने के बाद it didn't really help me with my anxiety, and it didn't make everything better, but I felt like it stopped me from running away from the thoughts that I had, and it helped me accept what was going on with me. It helped me accept how I was feeling. So मैं यहाँ पे रुका नहीं. I continued to journal, and I'm still doing it post February. Things got better. I got on track with what I was supposed to do, and in general everything came back on track. Like I went from feeling anxious, lethargic and having zero motivation to getting my routine back and getting back to work. अभी मैं जो ये record कर रहा हूँ post 2 weeks since my IELTS test, I feel like my anxiety has reduced. It has not completely gone. It pops up sometimes in between, but it does not get into my way. So out of the so many different methods, journaling has been a useful tool to help me gain clarity when I experience things that I had never experienced in my life before. So moment of truth. After 30 days of journaling, would I recommend it? Yeah, I would recommend it. I would recommend you at least try it once in your life. Now, it might not be very useful to everyone, but अगर आप उन लोगों में से हो जो काफी overthink करते हैं, then I feel like writing down your thoughts might be helpful, as after looking back at what you wrote, you can bottleneck your mind and only let the thoughts that are important to you flow through your mind. कुछ लोगों के लिए it might be difficult, you might face some challenges initially, but I feel like it is worth trying, and मुझे लगता है I will continue doing it. Do you have a journaling practice yourself? I would love to know your thoughts on this. Let me know in the comment section down below. So that's it. Thanks for watching, and I will see you guys in the next one. Bye bye.